वो मतलब अगर मेरे गानों में आता है ऐसे, अगर आपको लगता है तो वो सच है। कभी ऐसा कोई दौर गुजरा कि जब आप परेशान हुए हो? जब इब्तदाई दौर था उसमें ये था कि आगे बढ़ना, उसमें दिक्कतें भी आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, याद तो वो जरूरी भी है यार, थोड़ी सी रहनी चाहिए ताकि वो एलिमेंट जिंदगी में अगर नहीं रहेगा, मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट अधूरा होता है। वीडियो के लिए तो शायद फिल्में अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो वीडियो पे जा रही हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो एक गोली चलेगी और कई लाशें गिर जाएंगी। क्यों दोगे उल्लू के चरखे? 5 लाशें गिरेंगी। अरे जो भी है यार, क्यों तो दो ना तुम। आज तुम पुलिस फोर्स में, तुम पुलिस फोर्स में। हाँ, आज हम फुल फोर्स में। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी वर्दी भी छोटी पड़ जाती है। तो तुमने गैप रखा लंबा के नहीं हो जा रहा। Can I have the frame, please? सर मुझे कैसे दिखाई देगा? लाईटची समोर बघ केले नाही लाईटची समोर दिसतेत नाही, कसा होते डॅडी, ग्लेअर येते याच्या आतमध्ये. हाँ देखिए हावी साहब, एकदम इससे क्लोजर आपको मूवी पे नहीं मिलेगा। चलो सी द लोअर हाफ ऑफ द फ्रेम। लीव इट। लोअर हाफ देखिए। हाँ ये देखिए। हाँ, इधर है अमिताभ बच्चन। I set off from my house at 9 in the morning. It was the day Anand was going to be released. That was the first film to be released in Bombay. I was coming back at 6 in the evening from work, and that's when I faced recognition for the first time. When I left for work, nobody knew who I was. And within a couple of hours, people had begun recognizing the face. I was confident of being able to say and perhaps enact what was asked of me with a fair degree of success. What I was not confident about was my face and how it would look on the screen, whether that would be acceptable to the people. And I must admit that that is something that I still haven't been able to get over. I think to begin with, he was the most unlikely heroine. Maybe because of his looks. There's not the kind of looks which the heroes of that time had. They were very handsome and things like that. But he was very, very different with long limbs and, unusually tall.
my brother Amitabh, was very instrumental in my coming into films. He came across Khwaja Ahmad Abbas, who was making a film called Saath Hindustani, where he was looking for newcomers. I had by that time resigned from Calcutta, having decided that one way or the other I would enter the film industry. My father said, you know, if you want to enter a house and the door is locked and you can't enter it, you must jump over the wall. So that's exactly what I did. हिंदी फिल्म एक तरह से देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी फोकलोर है, और फोकलोर का हीरो किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में एक पर्सोनिफिकेशन होता है उस दौर की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं। और अगर 73 जब जिसमें आई थी जंजीर, ये वो दौर था कि जिसमें एक समाज में एक बेइत्मीनानी पैदा होना शुरू हो चुकी थी। उस पे से एक आम इंसान का एतमाद ख़त्म हो रहा था। सारे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, धीरे धीरे लोग उनसे डिसल्यूजन होना शुरू हो रहे थे। लिहाजा ये मोरालिटी डेवलप होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी कि भाई अगर कुछ इंसाफ हासिल करना है तो खुद ही करना पड़ेगा, कोई करने वाला नहीं है। तो जिस समाज की ये अखलाकी कदरें हो गई हों, उसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इस तरह का हीरो तस्लीम किया जाए। भाग कर कहाँ जाओगे हरामजादों? सारे जहन्नम से भी खींच के ले आऊंगा मैं तुम्हें। He falls down. Okay, I know. Car de vich mar de. He goes into the mirror. You murder him. Then we go to the court. Why am I killing him? Because he's ruined the whole family. Tanji, that I'm your son. You don't worry. And then they go to the court. दो गोली मार दिया, खत्म हुआ। अभी उसके ऊपर डंडा भी मारो, ये भी करो, वो भी करो। एक मर गया ना? हाँ? एक मर गया. Pradeep is already dead. हाँ. So these two are still left. इसको गोली मार दिया ना? इसको लगी गोली. He's fallen down. But he's not dead. Not that gruesome. Let him shoot them then. That'll be too gruesome. जो एक आदमी सप्रेस नहीं कर पाता, and then he revolts against the society. So you call it violence. Actually, that is the part of emotions. Hero का strong होना, that is the must, and that's why we call it hero worship. I got my confidence when I joined films. I couldn't enter a restaurant, for example. I had to think 10 times before going through this process all by myself. Right up to the time when I was working in Calcutta even, where I was an independent person. I was earning my own money. I was free. I don't know what it was, maybe the very idea of portraying a character, someone else, just performing in front of an audience. What it was, I can't really say. It was always a very exciting moment for me. Okay, can we take, sir? 13 take 1, 13 take 2, take 3. Diwar shot him to the superstar image. So you can say I joined the bandwagon. I only projected his light side of the character of Amitabh with Anthony. And then I realized that in my subsequent films, I must also have the light side of Anthony as well as the angry young man. And we blended these two characters together very beautifully till now. मैं आता तो हूँ, बट जाता हूँ कि नहीं टाइम में तो जाता हूँ कि नहीं। आइए भाई। ठोक दिया क्या सीन? तुम ठोकू मत भैया, वी आर नॉट ठोकू डायरेक्टर्स यार।
Lapit nahi, don't, you bloody idiot. Our whole future is at stake. We'll be making ad film all our life after the video. You will be making ad films. What about the guy that will come from behind and say, "Har Rose, Horlicks पीजिए, वो मैं हूँगा." I have always visualized the man I would, like to marry. And when I saw him, I said, "My God, this is the man." First, I saw Amit and Pune. He had come with K. Abbas, and then they said, "You know who he is? He's Bachchan, poet, Kavi Bachchan's son." Oh, I said, "Yes, I've read Bachchan. I like his poetry." And we saw this person, and everybody said, "But he's so thin." I mean, I said, "No, but he's got something. There's something in his personality." अपने घर की वजह से और अपने घराने के माहौल की वजह से वो हिंदुस्तानियत और ख़ास तौर से यूपी का जो फोक और उस जो कल्चर है और जो उसकी मिट्टी की महक है वो उनमें पूरी तरह मौजूद है। तो वो हिंदुस्तान में उनकी जड़ें बहुत गहरी हिंदुस्तान की ज़मीन है उसके कल्चर में। दूसरी तरफ उनकी तालीम हुई है पब्लिक स्कूल में, तो उसकी वजह से उनमें वो वेस्टर्न सोफिस्टिकेशन और वो पॉलिश भी मौजूद है जो ये चाहिए। अमिताभ बच्चन में जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ असरात की वजह से दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। Be happy. कल जो रात को मैंने गाना गाया वो सुर क्या था, वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। 1, 2, 3, 4 बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, अगेन आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। ठीक है, हो जाएगा। बाहर है हाँ, प्रॉब्लम, तोड़ देना, तोड़ खींचना नहीं, नहीं खींचूंगा, बिल्कुल नहीं खींचूंगा, घबराना नहीं। नहीं सैगल साहब नहीं कहूँगा, डोंट वरी, बी हैप्पी यार, डोंट वरी। अच्छा, ला 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 My father, he was Eastern, my mother more Western. And between the two of them, both my brother and me, received this lovely blend of both cultures. And I consider myself very fortunate that I was able to mix the two. And I find that in my existence today, that I draw a bit from my father, a bit from my mother. And face life with it.